गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ डिस्कस इंडियन पॉलिटी लाक्ष्मीकांत का बुक्स डिस्कस कर रहे हैं। 5th एडिशन जो नया बुक्स है जिसमें हमने डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स को। इस बार अपने फंडामेंटल राइट्स का 170 पेज से हम कंप्लीट कर रहे हैं। इतना तक हम कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। ओके, राइट टू फ्रीडम में प्रोटेक्शन किया है 6 राइट्स को। Okay, Article 19 guarantees all citizens the six rights. Okay, Article 19 guarantees to all the citizens the 6 rights there हैं. These are right to freedom of speech and expression, right to assemble, practice peaceably without arms. Okay. Article 19 में देखिए 6 राइट्स दिया हुआ है. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका स्पीच का फ्रीडम दे दिया है, बात कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके बाद राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म. आप कोई भी आर्म्स लेके नहीं जा सकते हैं. पीसफुल काम में आप एडजस्ट हो सकते हैं. इसके बारे में बात कर रहे हैं. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनिफॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. यूनिफॉर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं. और 4 में देखिए आर्टिकल, देखिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल 19 के अंदर जो 4 राइट्स दिए हैं. देखिए राइट टू मूव फ्रीली, आप मूव कर सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर फुल इंडिया में घूम सकते हैं. राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब कोई भी पार्ट्स में आप रह सकते हैं. ठीक है. राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन. अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन. ओके, जो ज्वाइन हो सकते हैं. एंड टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. ठीक है, आप एनी प्रोफेशन में ज्वाइन हो सकते हैं. ऑक्यूपेशन अगर ट्रेड और बिजनेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं. ओरिजिनल आर्टिकल 19 कंबाइंड कंटेंट 7 राइट्स. ओरिजिनल 7 राइट्स को कंटेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर 6 राइट्स दिया है, लेकिन आर्टिकल 19 जो है 7 राइट्स को देते हैं, कंटेंट करते हैं. बट द राइट टू एक्वायर, ओके, होल्ड एंड डिस्प्यूट प्रॉपर्टी वाज डिक्लेयर्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. देखिए आर्टिकल 19 में जो और एक जो ऐड किया था, तो उसमें राइट टू एक्वायर आप एक्वायर कर सकते हैं डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को. ओके, उसको डिलीट कर दिया गया है. ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वो पहले था. ठीक है, तो 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट में उसको डिलीट कर दिया गया था. These 6 rights are protected against only states action and not private individual. These 6 rights protected against any only state action. इस 6 rights को protected किया कर सकते हैं अपने only state action के against. ठीक है, एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकते. ठीक है. मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन. ओके, जो राइट है अवेलेबल किसके लिए ना, ओनली फॉर सिटीजन एंड टू शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, और जो एंड टू शेयर होल्डर, ओके, ऑफ ए कंपनी. बट नॉट द फॉरेनर्स के लिए नहीं है, और लीगल पर्सन्स के लिए भी नहीं है, लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशन, उसके लिए नहीं है. ठीक है. The state can impose reasonable restriction. The state impose कर सकते हैं reasonable restriction, लगा सकते हैं on the employment of these 6 rights. The states impose कर सकते हैं reasonable restriction, लगा सकते हैं enjoyment of these 6 rights. Okay, only on the grounds of mentioned Article 19 itself and not on the other grounds. Okay. Freedom of speech and expression. देखिए यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू. एवरी सिटीजन का व्यू सिटीजन उसका एक्सप्रेस व्यू दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओपिनियन, उसका ओपिनियन दे सकते हैं. बिलीफ, कन्विक्शन फ्रीली, ओके, बाई वर्ड, ओके, ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पिक्चरिंग और in any other manner. Okay, the Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes the following. Supreme Court held held freedom of speech and expression includes any of the include किया है following को. कि क्या किसको Supreme Court follow किया है, दिया है. Right to propagate one's view, ideology, view of others. आप राइट टू प्रोपोगेट एक व्यू को देख सकते हैं, और उसके साथ साथ अदर्स व्यू को भी देख सकते हैं. फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ्रीडम दिया गया है.
फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम दिया गया है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। राइट टू अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, देखिए यहाँ पर दिया गया है, राइट दिया है अगेंस्ट टैपिंग एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट दिया है, राइट अगेंस्ट टैपिंग, राइट अगेंस्ट टैपिंग एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट अगेंस्ट टैपिंग एंड टेलीफोन कन्वर्सन कर सकते हैं, राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट, ओके ठीक है, तो अगेंस्ट है यहाँ पर बात कर रहे हैं। राइट टू राइट क्या दिया है, टेलीकास्ट दैट हिज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकास्ट को दिया गया है, राइट गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का दिया, राइट अगेंस्ट बांध कॉल्ड बाई ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, राइट अगेंस्ट बंद के अगेंस्ट होना होगा, बंद नहीं करना होगा भाई पॉलिटिकल पार्टी जो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। और एक्टिविटी फ्रीडम ऑफ साइलेंस के बारे में आपको, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आपका साइलेंस का फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, आपका राइट टू नो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में आपका राइट है, जान सकते हैं आपको, ओके। राइट अगेंस्ट बंद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बंद नहीं कर सकते हैं, राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑफ ए न्यूज, राइट अगेंस्ट किसका राइट क्या है, इसके अगेंस्ट है, राइट फ्री सेंसरशिप ऑन न्यूज पेपर, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पॉकेट पिकिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और पिकेटिंग, ओके पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, जो स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, स्टेट इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखिए स्टेट इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ओके ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द एक्सरसाइज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी स्टेट की कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, एक्सप्रेशन, ओके स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सही रखने के लिए इंडिया का सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट के साथ, पब्लिक ऑर्डर, डिपेंडेंस, डिसेंसी मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफेंसेस, freedom of assembly, every citizen has the right to assemble peaceably and without arms, every citizen दिया गया है क्या है ना, right to assemble peaceably without arms में वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं और पीसफुली सब काज काम करें, इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, इंक्लूड किया गया होल्ड करे पब्लिक मीटिंग, राइट टू इंक्लूड होल्ड public meeting, demonstration and take out possessions, the freedom can be exercised only on public head. Freedom of assembly, every citizen has the right to assemble peaceably and without arms, यहाँ पर ओके यहाँ पर हमने पढ़ा, तो the freedom can be exercised on the public land, फ्रीडम जो है एक्सरसाइज कर सकते ओनली पब्लिक लैंड के ऊपर, एंड असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड और पीसफुल काम करे। द प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट एक वायलेंट, प्रोविजन प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वायलेंट, डिसऑर्डरली, विक्टोरियस असेंबलीज और वन दैट वाज ब्रेच ऑफ द पब्लिक पीस और वन दैट इन्वॉल्व्स आर्म्ड, वन जो पब्लिक पीस के लिए काम करे और वन जो है इन्फ्लुएंस करे आर्म्स के
पर आर्म्स में। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। इस राइट्स में अब तो स्ट्राइक में इंक्लूड नहीं होने के लिए कह रहे हैं, स्ट्राइक नहीं करिए। अगेन द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। स्टेट इम्पोज कर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली और टू ग्राउंड्स। ओके, exercise करे right of assembly and to grounds, namely sovereignty and integrity of India and public order, including maintenance of traffic in the area of concern. Okay, under Article 100, under Section 144, the Criminal Procedure Code. Okay, Criminal Procedure Code 1973, a magistrate can restrain an assembly. Magistrate जो है, एक magistrate जो है restrain an assembly meeting or procession if there is risk of obstruction. मीटिंग और procession कर सकते हैं if there is a risk of obstruction. Any annoyance or danger to human life, health or safety, or a disturbance of a public tranquility or riot, or any affray. अंडर सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, कोर्ट के बारे में। 73 मजिस्ट्रेट कैन रेस्ट्रेन एन असेंबली, रेस्ट्रेन कर सकते हैं असेंबली में, मीटिंग कर सके, मीटिंग और प्रोसेशन इफ देयर इज ए रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कहाँ पर रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन, एनियंस ऑफ डेंजर ह्यूमन लाइफ, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जहाँ पर डेंजर है ह्यूमन लाइफ, अगर हेल्थ और सेफ्टी प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूज होगा। अगर अंडर सेक्शन 144 मजिस्ट्रेट रेस्ट्रेन कर सकते हैं, रेस्ट्रेन एंड असेंबली। अंडर सेक्शन 141 इंडियन पेनल कोड, एंड एज असेंबली 5 और मोर पर्सन्स बिकम अनलॉफुल, 5 और मोर पर्सन बिकम अनलॉफुल हो जाएगा if the object is to restrict the execution, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो टू रेस्ट्रिक्ट कर रहे एक्सिक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, जब रेस्ट्रिक्ट कर रहे एक्सिक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस को, टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सेम पर्सन, फोर्सिबली ऑक्यूपाई करे द प्रॉपर्टी ऑफ सेम पर्सन का। 3 का द commit any mischief or criminal trespass. Again, trespass जो commit करे mischief or criminal trespass, to form some person to do, to force करे some person को काम करने के लिए, as illegal act, to threaten the government is or its official on exercising lawful powers. Okay, थ्रेट करे गवर्नमेंट और ऑफिशियल को ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स के अंदर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ऑल सिटीजन्स जो है राइट है टू फॉर्म करे एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ऑल सिटीजन्स का राइट है फॉर्म करे एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर सकते हैं, कंपनीज, पार्टनरशिप, फार्म्स, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड्स, यूनियंस और एनी बॉडी और पर्सन। It not only includes the right to start an association, it just include नहीं करता है just right to start an association or union, but also continue with the association or continue कर रहे association or union as such. Further, it covers negative right or right of not to form or join an association. It covers का negative right, नेगेटिव राइट क्या है दे रहे हैं, अब नॉट टू फॉर्म, नेगेटिव राइट को फॉर्म नहीं कर, नॉट टू फॉर्म करें और ज्वाइन एन एसोसिएशन ऑफ यूनियन, नहीं ज्वाइन करें एसोसिएशन ऑफ यूनियन। ठीक है, जो अच्छे काम नहीं करते उसमें नहीं ज्वाइन करिए। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज on the exercise of the right of this right by the states on the grounds of sovereignty and integrity of India.
ठीक है, reasonable restriction लगा दिया है, can be imposed on the exercise of these rights by the states and on the grounds of sovereignty or integrity of India. Public order and morality के बारे में बात कर रहे हैं. And subject to these restrictions, the citizens have the complete liberty. Citizens क्या है ना, liberty है to form association or unions for the citizens have the complete liberty to form करे association और यूनियंस, उसका लिबर्टी है. ओके, फॉर पासिंग लॉफुल ऑब्जेक्टिव, परसिंग करे लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स और एंड पर्पसेस. ओके, however the right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. The right to obtain recognition of the association is not a fundamental right. The Supreme Court held that the trade union have no guarantee. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है ट्रेड यूनियन का जो है no कोई भी गारंटी नहीं है. राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है ट्रेड यूनियन का कोई भी गारंटी नहीं है. राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है. राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट. ओके, and the right to strike cannot be controlled by the appropriate industrial law. Okay, the right to strike cannot be controlled by the appropriate industrial law. Okay, freedom of movement. ठीक है, freedom of movement क्या है? freedom of movement है this freedom. This freedom entities every citizens to move freely. Every citizens to move freely करे and throughout the territory of the country of the country. The freedom करे the he can move freely from one state to another, from one place to another with a state in a state. Okay, the right underline the idea of that India is one of the unite of the India is one of the unite. So far as the cities the citizens are concerned, the purpose is to promote national feeling, promote national feelings and not parochialism. The grounds of imposing reasonable restriction, the grounds क्या ना impose करे reasonable restriction on this freedom are two. Okay, namely the interest of general public interest जो है of general public interest. Okay, and the protection of interest of any scheduled tribe का. The entry of outsiders its tribal areas is the entry the outsiders जो है tribal area में restricted है entry करना to protect the distinctive culture. उनका distinctive culture को protect करने के लिए language, customs and manners of scheduled tribes and safeguard करे traditional vocation and properties against exploration. Okay, the Supreme Court held that the freedom of movement and prostitutes freedom of movement of prostitutes can be restricted है on the ground of public health के लिए. Okay, and it is in the interest of public norms. Okay, morals. The Bombay High Court deleted the restrictions on the movement of the person affected by AIDS. ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन कर दिया है. और the freedom of movement has two dimensions. Freedom of movement, the internal right to move inside the industry inside the country, and external right to move outside the country, and the right to come back to the country. Article 19 protects only the first dimension. Article 19 protects first dimension. The second dimension is dealt with Article 21. Second dimension जो है deal करता है किसके साथ? Article 21 के साथ. देखिए, the first Article 19 protect कर first dimension and the second dimension dealt by the Article 21. Okay, personal liberty, right to life and personal liberty. Freedom of residence. Okay. Freedom of residence. Every citizen have the right to reside. Every citizens have the
right to reside and settle any of the part of the territory of the country. कोई भी part में उस right, the right to right has two parts. Right two part है, right to reside in any part of the country, which means this to stay at any place of the temporarily. The right to settle any part of the country, which means to set up a home set up करे domicile at any place, okay, permanently. The right to remove internal barriers. Right, intended to remove internal barriers. Internal barriers से remove करे, बाहर हो जाए within the country and or between the any parts, any of its parts. The this promotes nationalism and avoids narrow-mindedness. Narrow-mindedness stop करे and nationalism को बढ़ाए. The state can impose regional restrictions impose कर सकते हैं and exercise of this and exercise करे on the rights of the on two grounds, namely the interest of the general public and the protection करे of the interest of any scheduled tribes. Okay, protect करे the right to of outsiders or reside. right क्या है ना, outsiders का right क्या है ना, and reside and settle करे. outsider right of outsider का जो है outsider right क्या है ना, to reside करे, settle करे. tribal area is restricted है to protect the distinctive culture, language, customs and manners, scheduled tribes and safeguard करे traditional occupation and promote properties against exploitation. Okay, in many parts of the country the tribal have been permitted regulate their property right to accordance with their customary law and rules. The Supreme Court held that certain areas can be banned, they have Supreme Court for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offences के लिए ban कर दिया है. From this above, it is clear the right to residence and is the right to movement is overlapping on some extent. Right to move residence and right to movement of overlapping कर रहा है to some extent में, but both the complementary to each other. Okay, complementary to each other have freedom of profession. Freedom of profession freedom क्या है? All citizens are given to right to practice any profession. कोई भी profession में join हो सकता है और to carry any occupation में join हो सकता है. Trade, business, okay. This right is very wide as it covers all the means of earning one's livelihood. कोई भी अर्निंग कर सकता है उसका लाइवलीहुड चलाने के लिए. द स्टेट कैन इम्पोज जनरल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया है स्टेट एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट इन इंटरेस्ट इन जनरल पब्लिक. ओके, फर्दर द स्टेट इज एम्फर्ड टू prescribe professional or technical qualification necessary for practicing for any profession or carry on any occupation or trade and business. Okay, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी कर दिया है और प्रैक्टिसाइजिंग एनी प्रोफेशन में गेटिंग ऑफ एनी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस. स्टेट इज एम्पावर्ड कैरी ऑन इटसेल्फ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री. ओके, सर्विस whether in the exclusion complete or partial substitution or otherwise. Okay, thus no objection can be made when the state carries on a trade business. कोई भी objection नहीं हो करेगा. ठीक है, state trade business industry service either as a monopoly. Okay, whether as a monopoly. Okay, monopoly to the exclusion of citizens or in competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly. State not required नहीं है to justify monopoly के justify करने के. This right does not include the right to carry. ये right not include नहीं कर रहा है the right to carry on the profession or business में or trade or occupation that is immoral, trafficking in women or children or dangerous, harmful, use drugs. Okay, explosive. The state can absolutely prohibit these, regulate them through licensing में दे सकता है. Okay,
provision, business, trade, occupation, okay, moral, that is immoral, trafficking in women against children, dangerous, okay, dangerous, harmful drugs, उसमें restriction लगा है, license चाहिए, protection of in respect of conviction for offense, protection in respect of conviction or for offense, Article 20 grants there are protection in respect of conviction for offense. Article 20 grants protection against arbitrary and expulsive punishment to an accused person. Article 20 protection arbitrary and excessive punishment there to the accused person, to whether citizens or foreigner or legal person like a company, okay, or the corporation. It contains 3 provisions in that direction. It contains कर रहे हैं 3 provision को, okay. No ex post facto law, कोई भी ex post facto law नहीं है. No double jeopardy, no self incrimination. No ex post facto मतलब no person shall be convicted of any offences except for violation of a few enforced at the time of commission at the act, nor okay, ठीक है. No person, कोई person नहीं करेगा convicted of any offences except violation of a law, force of law enforced, okay, and time in the commission of the act, okay. They are subject to a penalty greater than that prescribed by a law enforced at the time of the commission of the act. No double jeopardy. No person shall be prosecuted any punishment for the same offence, okay, offence more than once. No self-incrimination. No person accused of any offence shall be compelled to be witness against himself. An ex post facto जो है laws in an ex post facto laws is one that impose penalties, impose करेगा penalty retrospectively, actively, that is upon acts already done or which increases the penalties for such acts. The enactment of such a law is prohibited by the first provision of Article 20. However, this limitation is imposed only on criminal law. This limitation is imposed only on criminal law, okay, and not on civil laws or taxes. Yeah, but this limitation is imposed only on criminal laws, not in civil laws or tax laws. In other words, a civil liability or a tax can be imposed, and tax imposed respectively. Further, this provision prohibits only conviction. A provision this provision forbids only conviction or sentence under an ex post facto. Criminal laws are not the trial thereof. Further, finally, the protection under the provisions cannot be claimed in case of preventive detection or deterrent, demanding security from a person. Ex post facto is law जो है one of the impose किया गया है penalty retrospectively, okay, that is upon acts already done which increases the penalty. जहाँ पर penalty increase हो रहा है enactment of such a law is prohibited. Such law prohibited किया गया by the first provision Article 20 के अंदर. However, this limitation is imposed only on criminal laws. is यहाँ पर लॉ क्या लिमिटेशन क्या है, इज इम्पोज्ड ओनली क्रिमिनल लॉ के अंदर एंड नॉट ऑन सिविल लॉज के अंदर नहीं किया गया और टैक्स लॉज के अंदर नहीं किया गया. इन अदर वर्ड्स, ए सिविल लायबिलिटी और टैक्स कैन इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली. जब पर सिविल लायबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज्ड किया गया रेट्रोस्पेक्टिवली. फर्दर, दिस प्रोविजन ओनली कन्विक्टेड ऑन सिंगल सेंटेंस अंडर ex post facto criminal law, not the trial thereof. Finally, the protection under the provision cannot be claimed in case of preventive detention or demanding security from a person. The protection against double jeopardy is available only in proceeding before a court of law or a judicial tribunal. In other words, it is not available in proceeding before Department of Administrative Authorities, as they are not just civil judicial nature.
It is not available proceeding before departmental administrative authorities and nor the judicial member. Okay. The protection against self incrimination. Protection किसके against self incrimination extends क्या रहा है, both oral evidence and documentary evidence. Oral and documentary evidence, however, it does not extend it compulsory production of material objects. Compulsory to give thumb impression, specimen signature, blood specimen. Compulsory prohibition of the body. Further, it extends only to criminal proceeding and not to civil proceeding or proceeding which are not of criminal nature. Protection of life and personal liberty. So thank you friend, इतना तक हमने कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है.